ये ये हाँ भाई, तो फिर आ गया अपने गे ऑडियंस के लिए, ऑफ कोर्स। वो रात कब करेगा भाई? अरे देखते हैं उसकी वीडियो यार। प्लान तो था 11 बजे लाइव जाने का, बट क्या करे, वीडियो बनाना। विजय डी के एल्बम ड्रॉप्ड? क्या बात कर रहे हैं? आ जाओ भाई, हम कर्मा के इंटरव्यूज, आई मीन कर्मा समर वॉकर, ये क्या है? रियल टॉक। अरे यार, Cadbury Silk. क्लोज How योर far you go for love? चलो अपन स्टार्टिंग से देखेंगे। लेट्स सी। ओके, ज्योति सरदार, हाँ। यो, आज का खाता खोल दिया है भाई, द अब्दुल काशिफ ने 20 रुपए देके। क्या बात है, यू द रियल जी मैन। उर्वशी, उर्वशी आ गया क्या भाई? हनी सिंह डीट। अरे तो प्लान इवेंचुअली वही था कि हनी सिंह के डीट को बादशाह के गाने से और रफ्तार के गाने से और इक्का के गाने से सब पूरा माफिया मुंडर करके मार चोद देते फुल। ये प्लान था भाई पूरा, फुल कंपैरिजन वाला लाइव स्ट्रीम करने का, बट वीडियो बना दिया अलग से बादशाह पे। मेरे बर्थडे वाले मनी कलेक्शन दे, मैं रफ्तार हूं। नहीं दे रहा भाई, इट्स साहिल थोड़ी है रफ्तार का नाम। रोहन भाई तो ओवर कंसिस्टेंट हो गए। क्या हुआ, रोहन भाई ने अभी क्या कर दिया? नहीं, नो कंपैरिजन नहीं, मैं म्यूजिक वीडियो कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, गाने की नहीं। चलो मैं स्क्रीन चेंज कर देता हूँ। वाह, नाइस, ब्यूटीफुल। स्क्रीन चेंज की बात कर रहा हूँ भाई, डोंट गेट मी रॉन्ग। चलो, जस्ट किडिंग। It just happened out of the blue, and for that, full credit to Karma. So मैं भी before we ब्लू get ही into the पहन रहा हूँ। episode, I quickly want to tell you guys a little BTS info on how it actually happened. I was in BTS Bombay in India, info, and yeah. a couple of days before I was supposed to fly out, I get a message, and Karma was like, "Hey, I see you in Bombay, and our conversation has been pending for a while. We were supposed to have it back earlier in the year. आरजी बकेट लिस्ट के So let's फैन have पेज it भी now." अमीर है And I यार, was like, "But डैम, I'm 20 leaving in रुपए 2 दिया, days." थैंक यू ब्रो। And my first instinct was, "Oh my God, I can't do it," because I really genuinely like to prep well before any podcast session. Because then I feel like I can do justice to the artist and their art, right? So I was like, I don't have time to prep. So my first instinct was to say no. And अरे of course, then बाप I रे। didn't have a studio, like a crew, camera setup, nothing, right? मेरे पास कुछ नहीं था. So Karma very sweetly was like, "I'll take care of all of that if you agree." So कर्मा भाई, कम ऑन यार, टेक केयर ऑफ आवर स्टफ टू। मुंबई में वी कैन रिकॉर्ड कर्मा, इट वुड बी फन। finally what I did was open my laptop. I went back to the document I had started preparing March May, and I usko dekha, and I was like, "Oh, this is more than 10 pages of notes." So I was like, "Okay, I think I have enough to go on, to build on. And if I get a day and a half of like proper prep time, I can do this." So that's when I told him, "Okay, let's do it." And then full credit to him. He really went all out to one, make it up to me for canceling earlier. So yay. And also like he was just the best host, and I just had the best time. It was बेस्ट such a होस्ट। fun experience, and I'm glad we got to do this face to face, as opposed to a Zoom call. So yeah, and thank you, Lost Films, the crew. They were amazing. My अच्छा, intent, now उनने let's ही just करा get क्या? into the लॉस्ट intent, फिल्म्स because we नहीं have to करा है define that before we जब do म्यूजिक anything. वीडियो करते कर्मा की? My intent behind doing a session with Karma was आरजी to बकेट get लिस्ट का to फैन know पेज भी रुक ही the नहीं रहा, real और Vivek 30 रुपए a दे रहा lot. भाई।
you बहुत know, पैसे भाई. beyond his rapper persona and all of that, beyond the songs and the things he says in his Cruiserweight music. champion है तू RJ Because I Bucketlist. understand, and he's admitted this himself. He's an introvert, and I'm one as well. So I understand the struggles, and I feel like there's a lot you can क्या say तुम लोग भी and probably कर्मा के लिए want to रुके हो? say मैं भी कर्मा के that लिए you रुका हूँ. can't say in your songs. So I wanted his fans and even his non-fans. I mean, I hope they convert to fans by the end of this episode. That's my hope. But I wanted people to really just see Vivek Arora for the person he is. And I wanted to be able to create that sort of comfortable बट space कर्मा for का him to इंटरव्यू just था ना, विवेक chill अरोड़ा कौन and है? chat with me like, you'd catch up with someone, a friend. And that was my only condition. I was like, please make sure the chairs or the sofa or the couch or whatever we are sitting on is comfortable because Yeah, the अगर chair वो is good. comfortable होगा अरे तो यार we ये can नील just chill वापस आ and गया यार, relax. 100 रुपए So दे दिए यार we इसने. achieved that. Hello लेकिन sexy. चुप शादी वाले wait, मैं chairs I'm according not to Karma. falling for it भाई. लेकिन I Today. think the Nah, vibe today was I'm a just different right human being. and it was a lot of fun, and I genuinely hope everyone enjoys the conversation. I hope I was able to do justice to it. I hope we are able to see him for who he is, which is a really genuine, real, warm person. That's my takeaway. And I just have to end this by saying that I खत्म हो don't गया, think I इतना ही have था laughed पॉडकास्ट. so much ever in a podcast session. He is genuinely That as was nice. sarcastic and funny as he is in his song. So I had a blast. Thank you again, Karma. Thank you, Lost Films. Thank you, everyone who was there on set and Thank you everyone guys who for helped to watching. make this episode come together. And forgive me if we look jaundiced. I don't understand color correction that well yet, and I've Jaundiced. edited it myself. So, agar hum zyada yellow lag rahe, it's not my fault. Just forget Saturation. about it. So, anyway, let's get right into it. Here it is, Real Talk, episode 5 with Karma. Real people, real conversation, real music, real art, real world, real talk. क्या बात है. मैं भी एक पॉडकास्ट खोलूंगा जल्दी, बताऊंगा. Spotify only Hey everyone, रहेगा. welcome to another episode of Real Talk. And जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ बैठे अरे यार हैं ये अच्छे सेटअप के पीछे वो वाला लाइट हमेशा होता है, वो जो 3 टांग है जिसकी. Namaste, everyone. विवेक अरोड़ा, जो कहते हैं मेरा नाम कर्मा है, and I have a lot to say. Yes, a lot to say. I hope you have a lot to say today. I hope, yeah. विवेक अमजद Depends on खान, the questions. कर्मा के ऊपर है. Okay. Well, this conversation has been 2 years in the making. I remember when MYP dropped, there were a lot of requests from you guys to bring Karma on Real Talk, and I reached out to you as well. अच्छा भड़वो, तुम सारे जाके ज्योति सरदार के चैनल पे रिक्वेस्ट कर रहे हो कर्मा लाओ, के ये करो वो करो, और फिर इधर आके बोलते हो अरे सेक्सी. कल वहां आ रिपीट पे सुन रहा था, मजा आ गया. अरे यार इसको कोई चुप कराओ यार, ये इसको कैसे कर सकते हैं कि ये पैसे ही ना दे पाए. ये अजीब आदमी है भाई. अमीरी के बिना पैसे देते जा रहा है. मैं आई कांट बिलीव दिस. मैं ये बोल रहा हूँ कि अरे पैसे मत दो. ये क्या है, उधर इधर फ्लिप कर रहा हूँ तब से मैं. कौन सा साइड, रुको भाई. Yeah, and then this time I reached out to you. Yeah. So like you're in Bombay. I should be Yeah. So it didn't happen then, but I always say this, that the universe has amazing Universe. timing and things happen when they're supposed to I missed happen. And that I chat. am in Bombay and he reached out to me, and this is my first podcast in person with someone. So Yeah. yay! I'm very excited. Yeah, me too. Let's go. कर्मा इतना स्वीट है. उफ. Yeah, he's been nice to me as well. मेरे को तो रिप्लाई ही नहीं कर रहा. He's so nice. So yeah, you've had quite the journey since then, since 2021, and congratulations on that journey. I'm sure there have been a lot of learnings. Yeah. And बधाई हो, आपने नई गाड़ी ली है. Thank you. So that's another milestone. Thank you. But I want to say Oh, डबल एंट्री गाड़ी लिए, माइलस्टोन. क्या बात है. that I was actually very excited to talk to you in particular. Of all the people whose music I react to and review, because पहले से I saw that documentary of yours. And for That's me, not that my was a triggered turning by. point. Because, I mean, there's no one else on whom I've seen a documentary like that. Yeah. So instantly I felt that I know you and you're a very real person. And there's just something very endearing about you. So that Vivek, that Karma in that documentary and the one who's sitting here today, how much do you relate to that Karma and how much of that is not you anymore? See that documentary, वो documentary एक episode of my life पे है. When I
lost my father, right? वो तब की documentary, and actually that documentary is a power shift from me being someone. वो documentary वो episode है जहाँ से because that was a time where बंदा अच्छा ही कर रहा है without I was label भी, to be being called honest. out Kalamkar se, and things were going Sister on. So Urvashi. that Vivek is still there. I mean, it's the same guy, but in terms of artistry, I have of course evolved in terms of मैं पुराने गाने अगर अपने सुनता हूँ तो I'm like this pocket, I've missed this pocket. Okay. But of course, like time से आप सीखते हो. But as human, I'm the same guy, and I think it's DMC ने तेरे को मेंशन किया है रे. Now what यार, ये लड़की लोग से परेशान हो गया हो, स्पेशली जो रैप करते भाई यार. अब क्या DMC यार. I was avoiding the beef, but if you are all in, I know how to rap. Trust me. This नहीं, मेरे को किधर मेंशन नहीं किया है. क्या बोल रहे हो? कुछ भी क्यों बोल रहे हो? अफवाह क्यों फैलाते हो भाई? ये राज शर्मा इतना अच्छा नाम है, चूतिया ऐसा न्यूज देता है. कर्मा स्टैमर नहीं कर रहा, नॉर्मली करता है बात. अब तेरे को वो दिक्कत है. एक बंदा रिकवर करे अपने स्टैमरिंग से तो भी तेरे को प्रॉब्लम है. भाई ये सही से क्यों बात कर रहा है मेरे जैसा? अरे चुप भाई. सॉरी ब्रदर. और आग डाल रहा है. इसको बैन करो. कौन है? मॉड नहीं है क्या इधर कोई? This is the real flex. You stay real. I mean, you meet me after 5 years, I'll be more successful, but I'll be the same guy. But you'll be the same guy. Nice, nice. And that's what I noticed in that documentary. Like, you're a very real, normal, like, guy next door. And I just loved was you were sitting and eating. You're always eating, by the way. That's one thing I remember. But I felt like, how is this guy a rapper? Because What? Disrespect देखो. How is this guy a rapper? कर्मा भाई मैं होता सुन के नहीं लेता भाई. How is this guy a rapper बोला. Damn. Shit. ऑडियंस को दिक्कत की है, सही से बोल क्यों रहा है? ज्योति सरदार को दिक्कत, ये रैपर कैसा है? a rapper's like first thing about a rapper's personality is being braggadocious, right, and flexing. And it just seemed to me like this is not this guy, but he's playing a part because he's chosen this life path and he's chosen this passion for himself. So, like, are you someone who is you love something, so now you've turned your personality to fit the expectations of the game? No, actually, that's the hack. I don't really try to fit in because I know that that image is already out there. Like somebody's doing that. Somebody's already trying to fit in, and people are actually playing. As an artist, you play a character. आप एक character ही play करते हो. You meet anyone. People जिन लोगों का cult होता है ना, वो लोग उनके fans उनकी गानों से ज़्यादा उनकी story पे आते हैं. You know, that's the cult following because you know, oh, I know this guy. He's like I know ये बात बोलेगा because I know him. But that fact. So having that, and on top of that, I feel that you know, in general, if you, what was the question? Are you playing a role that's not the real you when? Yeah. No, so I'll tell you. Question? See, being real is actually बहुत ज़्यादा ज़रूरी है in rap. I'm not talking Answer about being an बताते entertainer भाई because बोल when गया you're क्या an question entertainer, था? you have to Happens entertain भाई, people and then happens. you have to do certain things जो शायद आपका mood नहीं है, you know. But when you are actually in this kind of, for me, I started rapping because I wanted to say my thoughts out. एक मिनट है, कोई तो तारीफ कर रहा है मेरी. To be very honest, Ritum is the only guy close who is actually takes out good points, great work. ब्रो तेरे को 1 साल से तेरा चैनल फॉलो कर रहा हूँ, एंड ब्रो इट्स रियली ऑसम टू वॉच यू. कुछ बोल के फायदा नहीं है राज शर्मा. तूने मेरे को डीएमसी की स्टोरी चेक करने भेजा है. यू आर द क्रूअल, सबसे गंदा ह्यूमन बीइंग जो तू हो सकता है वो वही है तू, समझा. अभी तारीफ करने से तेरे को माफ नहीं करने वाला मैं. गिव मी 2 days. This is the sole purpose of it. I never thought like this all is magic. You know, people want to know me and they pay to see me, or you know, it's magic. Because I never I knew that I'm going to make it, but the pace of it
is what जो मुझको surprise करते हैं कि okay, it's been like 5 years and people are here in like 15 साल क्या से लगता लोग भाई and they तेरे still को try कैसा to लगता achieve तेरे को this अगर in पॉडकास्ट terms करने of का मौका the मिलता? मैं कोशिश करता कि कुछ यूनिक हो. व्हाट इफ हमने 1 घंटा बात ही नहीं किया, बस एक दूसरे को घूर रहे. वाओ, दैट्स सो यूनिक. इमेजिन बस घूर रहे एक दूसरे को, स्माइलिंग, नथिंग, कोई गाने को प्रमोट नहीं करा, कुछ नहीं. इट्स मी एंड कर्मा स्टेयरिंग एट ईच अदर भाई. दैट्स सो कूल. सोचो तुम लोग, ब्रेकिंग द बाउंड्रीज, नॉट इवन ब्रेकिंग द आइस भाई. ऐसी बीइंग ऑकवर्ड एज यू नो. लोग इज्जत करते हैं, you know, and I feel that this is the reason I don't really play any kind of character. It's just me, and this is actually You're a just you character. telling your story. That's the intent always has been. I've been a very introvert kind of guy. So Yeah, I'm coming to that. क्लास में अगर मुझे पता भी होता था कि you know ये आंसर है, I was not having that confidence कि मैं बोल दूं कि okay, I know the answer, because I was a very like पढ़ाई में अच्छा but still like you know it was like the same kind of guy that okay, I'm not gonna say it because I lack I don't like the way they are bonding bro. कुछ तो अंदर मेरे ट्रिगर हो रहा है. I don't know what is it. मेरा अलग था भाई. मैं मैथ्स में I was the आर्यभट्टा ऑफ मैथ्स. 0 ऐसा नहीं बोल रहा हूँ. I was really good मैथ्स में. तो मैं टीचर को अलग वे बताता था वही आंसर करने का, भले वो थोड़ा लंबा स्ट्रेच्ड आउट भी होता था, बट टीचर को एनकरेज करना चाहिए बच्चों को. वो बोलती थी ये क्या है, तू ऐसा खाने की जगह ऐसा खा रहा है. बिच, मेरी मर्जी में कैसे भी खाऊं भाई. डैम ब्रो. एनीवेज, क्यों फुकट में गुस्सा हो रहा हूं. confidence. Like saying present ma'am was a challenge for me. Like oh shit, I have to say this again, you know. So it was like I don't like know to the talk struggle. much. Yeah. And on top of that, I feel like playing a character, you have to break the character. Like आप कभी ना कभी तो break करते ही हो character, and that's what your fan don't want to see. It's real. True. And also when I first reached out to you, it was really funny. But he says to me, his reply is, I was like, do you want to do the podcast? I totally get it if you don't. And he says to me, he's like, yeah, let's do it. But I'm a really big introvert. Like these two things came together in one message, and all I saw in that was a guy who really wants to talk, but he's also super like held back. But you want to talk. But you are leaning on the introvert tag as maybe a crutch. Do you think you do that? No, I think that, see, the reason of less interviews and less live and less social media presence is because anything I want to say, I do it in my songs. If I ये तो कृष्णा ने भी बोला था यार, ये दोनों काफी सिमिलर है. if I like you, if I don't like you, and ओहो अभी लाइकनेस पे बात आ रही है. कर्मा, watch what you're saying. I'm also a creator. anything I've been doing, I will write that instead of going live or posting a story about it. I like that because it's my way, and I'm trying to break that though. I try to talk now because there are so many things I cannot say in a song, but I can say, you know. So yeah, it's like it's fun. It's a balance. I'm trying to keep a balance. दिख रहा है. Okay, but that whole introvert bit, like it just feels like, and I think this applies to most of us. We're all longing for connection, but we're also very like averse to a real one. वॉचिंग यू फ्रॉम गोवा, ये सब क्यों बता रहे हो यार? स्ट्रीमिंग फ्रॉम पनवेल, अरे क्या भाई, कुछ मतलब नहीं है, कुछ भी बोल रहा है. किधर से भी देख भाई, मेरे को क्या करने है? You know, Exactly. we're very cautious. Exactly. So is that you? Yes. I'm a very cautious one. You have to have that X factor for me to be in your space. Otherwise, there is no point. I'll 100% I'll find an excuse and I'll just go. You'll never catch me. Like, see ya later. Okay, so why are you like, I have to ask this because
You reached out to me like so randomly. It was so out of the blue. I was totally not ready for it. 10 बार बोल चुके हैं ज्योति सरदार, यू रीच्ड आउट टू मी, यू रीच्ड आउट टू मी। कर्मा भाई मैं नहीं सहता, बोल रहा हूँ मैं। But I want to know why do you Why do you reach me? feel right now that you're ready to have a conversation now and to sit down and talk to me? First of all, like, you know, I've seen स्माइल क्यों कर रहा है कर्मा ऐसा यार? लुक एट द ब्लश। ओ माय गॉड, देहरादून का मेरा खून फुदकता हुआ भाई। your videos, so I know that this conversation is going to be logical and real. It's not going to be like, hey, what's up, like, बताइए मुझे आपका top 5 or it's going to be a real talk, right? Right. And on top of that, अरे वो when you texted me and MYP जब आई थी उस वक्त मैंने उसमें सब कुछ बोल दिया था, and I hate these Zoom वाला. It's not real. It's not a real talk. You should Wordplay. change that. It can be. Just say. Okay. In real talk. You don't prefer it. Okay. Yeah, I feel that you know when you're in the same space, Yeah. you express differently. I agree. No? I agree. That's actually. I was talking to him as well that, you know, if it's a talk show, then talk instead of act, and I know that you will talk. No. So, yeah, that's the reason. And then of course it was long due as well. ये क्या है कि इधर कौन सा मैं स्प्लिट्सविला आ गया भाई? क्या चालू है? आई नो तुम बहुत अच्छे हो। अरे तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो, तुम रैपर नहीं लगते। अरे तुम भी नहीं लगते होस्ट। अरे इधर नहीं, जूम में नहीं करना चाहिए। अरे फेस टू फेस कर रहे। अरे क्या? Why? And of course I've dropped an EP. I had so much to talk to. Good EP by the way. And you've Go, had go. quite the journey this past year. Yeah, man. Very, very, I won't say controversial, very, very eventful. Very eventful. Let's say it's eventful. Yeah. But you know, the whole idea of having a conversation or having a real conversation, I know I thrive on them. And when I have a really good conversation with anyone, even in like regular life, it makes me actually more probably self-aware. So is there someone in your life that you have these kind of conversations with? Is that your process of, because That's you're a a very good question. self-aware guy, that came across even in the documentary when I Again, first saw it. Self-aware You guy. were like, if I don't experience bad things in life, what will I write about? That was a very self-aware Exactly. statement. And वो मैं आज भी believe करता हूँ. See, as an artist, no, you have to be really emotional. Yeah. You know, so मैं अपना हर loss और हर profit बहुत ज़्यादा दिल पे लेता हूँ. I never forget. Sometimes I forgive, but I don't forget. And in terms of like profit as well and loss as well. See, if I'm making ये टिंडर डेट जैसा क्यों लग रहा है? अच्छा तुम्हें भी लग रहा है? मैं कुछ उल्टा पुल्टा बोल के फिर बाद में ज्योति सरदार स्ट्राइक मार दे, यही बचा जिंदगी में बस। कहा है मेवे से स्ट्राइक पड़ती थी, कहा तो वैसा। a sad song, right? I have to go through that pain Yeah. to transfer that pain. उस गाने में वो दिखना चाहिए उतना दर्द, and you cannot fake it. So you have to go through a That's lot true. of, आपको जाना पड़ता है तकलीफों से. If you are जोक्स अपार्ट, रियल ट्रैक्स ज्यादा चलती है स्पॉटिफाई पे। दैट्स व्हाई बेला इज एकदम ज्यादा चलने वाला आर्टिस्ट। और दुनिया मकार ईपी का सबसे ज्यादा प्लेड गाना है, क्योंकि उसमें बहुत मतलब ये दुनिया में रखा है क्या भाई? नशा पैसा और माँ, रियल एज इट गेट्स। trying to be real, because in the end जिंदगी में तकलीफें हैं. You cannot make a club banger throughout the year. You know, because actually साल में बहुत सारी चीजें होती हैं, and then you have to at least address them. Yeah. So an artist have to go through it. वो it's magical how I'm able to express my pain into a song, and then you express the same thing, because when I drop, जब मैं दुनिया मक्कार, lessons, काली दूंगी, what's the track? Lessons. ये जब गाने ड्रॉप करता हूँ, राइट, Yeah. मेरे को वॉइस मैसेज आते हैं रोते हुए ना लोगों के, एंड दैट वो दैट्स नॉट अ फ्लेक्स राइट? अगर तुम गाने डाल रहे हो और लोगों के रोते हुए वॉइस मैसेज आ रहे हैं कि प्लीज मत डालो। ओ इट्स द अदर वे अराउंड। अच्छा, दुनिया मकार और लेसन सुन के वो ऐसा सुन के रोने को आ रहा है। अच्छा तो क्या उदित लेके आया क्या? ऐसा कैसा हो सकता है? और खुद खाया नहीं कुछ? बाप रे।
क्या बोल रहा है, तेरे को नहीं सुन रहा हूँ मैं, उधर रे। मुझको अमेज करता है क्योंकि आई फील लाइक हाउ आर दे फीलिंग इट, यू नो, सो इट्स मैजिक। एंड देन वो बहुत ज्यादा जो आप मेरे से भी बोल रहे हो कि इस साल जो हुआ, इट्स एक्चुअली अ प्रॉफिट, बिकॉज I have so much in me, the hunger is like into 10x, and then I have so much to say and express that Every other lower middle class family, bhai, hunger is 10x, bhai. Dude, that's poverty, man. of course you will feel it when an artist जो बोलता है कि यार मेरे को अब सैड सॉन्ग करने हैं, या तो वो इसलिए कर रहा है कि वो देख रहा है मार्केट में चल रहा है, यू नो, कि चलो मार्केट में चल रहा है तो ये करके देखते हैं। इधर एवरी टाइम वो पेन उठा रहा है तो उससे सैड चीजें ही बाहर आ रही है, अंडरस्टैंड। सो देयर वाज अ फेज इन माय लाइफ वेयर जब भी मैं लिख रहा था, सो इट वाज जस्ट द थिंग्स व्हिच डज नॉट मेक सेंस समटाइम, यू नो, बट देन यू हैव टू portray it in a way because I know that some people rely on artists like us. They do. Yeah. They can express through you and through your 100%, art. They feel 100%, validated. yeah. But so it's very interesting to me that you say you have to live through it. A lot of people try and escape those down phases of their life, right? And what they don't understand is those are, you have to live through those because they are actually the most transformative phases of your life. And 110%. Right. Like अगर आप जैसे आपने बोला कि डॉक्यूमेंट्री audio वाला quality कड़ी पत्ता से लिए। वर्जन ऑफ मी, Yeah. पिछले साल से मैं बहुत ज्यादा चेंज हो गया हूँ in terms of choice making and in terms of His music has developed, to be honest. पहले उतना ज़्यादा नहीं सुनता था मैं कर्मा, but now it's relatable. Now he is in my, you know, top 5. बहुत सी है, नरमा हट, क्रेजी, एकदम क्रेजी लेवल पे ग्रोथ कर्मा का ही आया है। एंड आई गेस जब इंडिपेंडेंट हो जाते हो तुम, और फिर एक यू नो बोलते ना किसी का कंट्रोल ना हो, और फिर एक फ्रीडम हो डिसीजन मेकिंग में अपने सॉन्ग्स में, तो फिर आई गेस आर्टिस्ट ऐसे डिलीवर करते हैं फिर in like day-to-day life as well. Why? Because I've lived through it and I don't escape it in sense of कि जी आपने शराब पी ली या आपने कुछ कर लिया या आप चले गए। No, I live alone and मतलब कि मैं अकेले रह के उसको ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ, गेस करता हूँ महीनों तक कि okay, this happened, could have been better or worse, क्या हो सकता था, and then you live through it and then eventually आप अरे वो नील बुरा मान गया क्या, चला गया वो नील बुरा मान गया क्या? आई डोंट वांट टू यू नो ज़्यादा disappoint a rich guy, I mean a subscriber. aware बनते हो, you know, and then you talk about it and then as a writer when you write about it, it's done. It's a therapy for writers. You know, when you are able to write your things out, when you write it down, आपने एक बार लिख दिया, so वो आपकी थेरेपी हो गई यार, आपने वो चीज़ आपको बॉदर शायद ही करे, you know. Yeah. There's a reason. And that's why I remember now, because I heard you talking about the song Believe, and you said कि मैंने वो बनाया, I heard it, I cried, and then I never listened to it again, Yes, but sir. it helped me deal. Yes, and With that still, whole- I haven't heard it. मैं उसे कहीं परफॉर्म नहीं करता, किसी को सुनाता भी नहीं हूँ if somebody, क्योंकि it's a heavy topic and it's like आपको बहुत ज़्यादा you have to go through that, you know, and then there are songs like that who I make, जो मैं सिर्फ अपने लिए बनाता हूँ। Who I make. आपको Yeah. पता होना चाहिए कि एक बिलीव जैसा गाना से ऑडियंस रिलेट नहीं करेगी जिसने वो लॉस नहीं देखा, यू नो, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि ओके इफ मैं इस पे इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो इसको इतने नंबर्स आने चाहिए, दिस इज जस्ट कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपने बाहर रखा, एंड यू हैव टू बी, आपको सेल्फ अवेयर होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ आर्टिस्ट्री कि भैया ये गाना जो है ये सबके लिए नहीं है, एंड दिस इज फॉर एवरीवन, एंड यू मार्केट दैट अकॉर्डिंगली एज वेल. So I was watching, it's very interesting, I want to know your point of view on this. I was watching Kid Cudi's interview and he said that sometimes when I'm just sitting and writing, and I'll start writing on a topic, like he wrote about losing his father, he wrote about being lonely or being depressed, and he was like, I didn't realize these were issues for me until I actually wrote those songs. So for him it was like the awareness was coming while he was trying to Therapeutic भी create. होता है. But for I guess, you, writing it sounds songs. like you are aware that you want to talk about it and it is going to be your therapy, and then with that intent
of Yeah, it yeah. being a therapy Yeah. type of process, Yeah. you do that. So I feel that these kind of songs actually जितना fans को help करते हैं ना, because आपको Podcast करता पता हूँ भी मैं। नहीं है same चीज कितनों के साथ हो रखी है, yeah, and then you cannot connect with them on a level कि आप उनको सिर्फ एक banger track दे रहे हो and they are bumping your song क्योंकि वो आपके fan है। आपकी जिम्मेदारी भी है कि you make them feel कि okay, I am also here to share this with you, and I went through this. It's a fact, right? परसों की बात है. So somebody got my number, and परसों नहीं, 4 दिन पहले की बात है. That somebody got my number of वो उसने मेरे को टेक्स्ट किया कि भैया मैं आपके शो पे आया था, आप मुझसे नहीं मिले and all of that. तो मैंने उसको बोल दिया था कि यार अगली बार जब होगा ना तो मैं तेरे को बैक स्टेज बुलाऊंगा पक्का, राइट? सो मैं अभिषेक मेरा छोटा भाई है, एंड देन आप पूछ रही थी ना आप किससे बात करते हो, अभी आई टेक एडवाइस फ्रॉम मेरा छोटा भाई. him. Okay. He is like 5 years younger than me, and he have a different perspective of everything. He Yeah. sees things very differently. So I Okay. talk to him like 2 घंटे 3 घंटे about what should be next. So Okay. कई बार ऐसा होता है कि वो मेरे को बताता है कि करना है या नहीं करना है. Sometimes he's wrong. Most of the time he's wrong. And बट वो सही है sometimes यार, he's एक actually न्यू right. जन But पर्सपेक्टिव लेना. but मैं he's भी your sparring board. ऐसे Yeah. बात He's सब the one छोटे you लोगों से have those पूछता हूँ भाई. conversations Because with. कोई बड़ा भाई नहीं है, फादर साहब भी नहीं है, तो एटलीस्ट यू नीड वन समवन टू भाई मैं वो ये सोच रहा हूँ रात बताइए की गलत है वीडियो या सही रिएक्शन है. बिकॉज एट दिस स्टेज वो रात कर्मा करते इज ना. राइट. कर्मा इज कल डालता ऑलवेज वीडियो. राइट. यू नो द पीपल मीट मी एंड दे आर लाइक भाई सही बोल रहे हो यार. ऑफ कोर्स ब्रो, डू इट मैन. सो देयर इज नो What do you mean by that? Like, are you being cocky or like? just, I am because people come to me. मैं अगर मैं किसी से बोलूँ कि यार मुझे ये करना है या ये गाना कैसा है, अरे क्या गाना है ब्रो, let's fucking do it, like क्या बात है. हाँ. But then you need someone in your life जो बोले कि अच्छा है, but don't you think कि redo this? यस मैन नहीं होनी चाहिए बेसिकली. And Got it. not about that part, about brands, what to choose, what not to choose. He helps me. Okay. But yeah, coming back to that, there is a same guy texted me saying that he was calling me बहुत ज़्यादा. तो मैं ना फोन साइलेंट कर दिया because मैं उससे एक बार बात कर चुका था कि ब्रो अपना ख्याल रखो और मेरा नंबर जहाँ से मिला है बांटना मत. ये तीसरा नंबर है इस साल में, ऐसा ऐसा सीन है, मत करना आप, एंड आई विल मीट यू. Yeah, I've seen. बट देन ही केप्ट कॉलिंग मी. एक दिन केप्ट कॉलिंग मी. मैच आ रहा था इंडिया, मैं और अभिषेक मैच देख रहे हैं, एंड देन इज कॉलिंग मी. आई जस्ट पुट माय फोन ऑन साइलेंट बिकॉज़ आई थॉट कि कर रहा होगा यार, व्हाटएवर. सो ही टेक्स्टेड मी सेइंग दैट आई एम गोना एंड माय दिस थिंग एंड आई डोंट वांट टू थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड you were my idol and shit like that. So I got like paranoid. I'm like, bro, I need to take this call, right? So I had a word with him about the things I'm telling you. I told him the same thing ki bro, this is gonna happen, but you So cannot finally after so end long things like this. somebody I was decided to calling give me him for 40 like rupees. 4 उर्वशी सुना एक का 2 स्टैंड का घंटे नहीं तो ब्रो, रहा उसका होगा. वीडियो And आया in the क्या? end मैंने छोड़ा ही नहीं जब तक उसने ये नहीं बोला कि भाई थैंक यू ब्रो, आई अंडरस्टैंड. उस दिन मुझे समझ में, एंड इज द सेम प्रॉब्लम पीपल गो थ्रू Yeah. कि यार फॉर Another 40 एग्जांपल rupees, thank you. आई नीड क्रुक्स टू कॉर्नर में कृष्णा का a name वीडियो of कल me. प्रीमियर होगा. है ना, मुझे अपना नाम बनाना है, या फिर मैं आई हैड अ बैड ब्रेकअप और और एक आ रहा आई है हैड Crooks Corner. मेरी पेरेंट्स से मेरा दिमाग नहीं मिलता. सो आई जस्ट वांट टू से दैट. उसको भी मैंने ये बोला कि भाई किसी का भी नहीं मिलता, एंड इट्स लाइफ, यू हैव टू फकिंग मेक योर वे थ्रू. यू Yeah. कैन नॉट जस्ट, ही इज लाइक आपको देखा आप कहाँ से कहाँ पहुंचे. बिकॉज मैंने उसको ये बोला कि मैं किसी को फोन करके ये नहीं बोल रहा था शी क्या लग रहा है मेरे टेबल के नीचे यार. supporting me, but I'm just not gonna live this life and all of that. So you need to really talk to your friends sometime. अब वो तो एक rare chance है, but in order to do that you have to make these songs like Duniya Makar, songs like Believe. There is one more coming. Yeah, that's the darkest. My God. And honestly, when fans relate to you so much because of songs like this, then I feel like they also कृष्णा have अगेन this क्रुक्स कॉर्नर में आ रहा है. लेट्स गो भाई. preconceived भी notion podcast that stream. Karma has everything figured out. But you know, Guys, देखो तुम देखो भाई, एटलीस्ट चलो मेरे से नहीं फील करते हो गया ऐसा, क्योंकि डेली मेरे को देखते हो उधर बकचोदी करते हुए. बट अगर तुम कोई आर्टिस्ट को या अपने आइडल को देख के ऐसा फील करते हो ना कि ये बंदा कहाँ से कहाँ पहुंच गया, ऐसा हो गया. फॉर एग्जाम्पल
किसको बोल सकते हैं अभी, अर्पित बाला समझ लो तुम्हारा फेवरेट क्रिएटर है, उसको देख रहे हो कि यार इतने साल से इसने मेहनत करी एंड फाइनली ही इज गेटिंग व्हाट ही डिजर्व्स। मैं भी तो कर रहा हूँ, मैं भी तो अपने एकेडमिक्स में ध्यान दे रहा हूँ, मैं भी तो ये कर रहा हूँ, मैं भी तो गाने बना रहा हूँ, मेरा नहीं हो रहा तो मैं वर्थ, मतलब मेरा वर्थ नहीं है, मैं वर्थ इट नहीं हूँ, मैं चूतिया हूँ, मैं कूद जाता हूँ कहीं से। ये नहीं होना चाहिए भाई, पहला अंडरस्टैंड, क्योंकि तुम 3 साल पहले कहाँ पे थे और अभी कहाँ पे हो, तो अपनी जर्नी का ग्रोथ लाइक अपना होता है यार। सब इट्स लाइक सब अलग अलग गेम खेल रहे, तो सब सेम लेवल पे नहीं हो सकते, तुम समझ रहे हो। अगर कर्मा WWE में आगे जा रहा है, रेसलमेनिया, रोड टू रेसलमेनिया खेल रहा है और आगे जा रहा है, और मैं फीफा खेल के डिवीजन 5 में पहुंच गया, अल्टीमेट टीम में फीफा खेल के मैं डिवीजन 5 पहुंच गया, जबकि मैं 2 महीने पहले डिवीजन 9 में था। तो मेरा वो 4 डिवीजन का ग्रोथ, और भले कर्मा ने अभी चालू किया और रेसलमेनिया खेल लिया उसने 2-3, दैट डोंट मीन शिट भाई, समझ रहे हो। इट्स डिफरेंट जर्नी भाई, दोनों की अलग जर्नी है। आई कांट लुक एट माइकल जॉर्डन, और क्योंकि उनका लाइफ इतना डेकोरेटेड रहा है, और फिर मैं अपनी लाइफ को कम नहीं समझ सकता मैं उसके वजह से, जस्ट बिकॉज मैं भी NBA में नहीं गया, ये नहीं गया। और ट्रस्ट मी भाई, मैं खुद वैसी चीज़ों पे जा चुका हूँ कि यार मेरे क्यों नहीं सब्स बढ़ रही, मैं तो ये कर रहा वो कर रहा। ब्रो, सबका अलग जर्नी होता है, सबका अलग ऑडियंस होता है। जब तुम्हारी खुद की कुछ आएगी ना, जब मेरा 100K वाला जर्नी अलग होगा यार, समझ रहे हो, तो वही तुम्हारा भी अलग होगा। गौश को टाइम लग गया, लाइक वो पहले भी टैलेंटेड था, उसको टाइम लग गया आगे जाने में, बट अब उसका फाइनली टाइम आ चुका है, तो कितना अलग है। पेशेंस इज द की टू सक्सेस, यस सर, एंड डिसिप्लिन एंड नेवर गिव अप भाई। तो फिर The whole nobody really has anything figured out in life. It's all about the journey, right? Yes, so sir. and your circumstance when you lost your father and you became you're the eldest son in the house, you became like the man of the house, and then you chose a path of creativity, which is the most unsure path one can choose. Right? And then you have people who are like, he's got it figured out, but there's a whole artistic spirit over there that's struggling to figure it out probably every day as you go along. Is that? I feel that this is not even 1% of what can be done in terms of achievement and in terms of artistry as well. You know, I have not figured it out. I'm still here. That's for Still your fans number to one. know. They have to know that that's Yeah. part of it. Yeah. Karma bhai, blush It's बहुत just the करते start, भाई। because you know, as you say, अब जैसा आपने बोला कि I've lost my father and I've this that, right? I just see them as lessons, and that was it's very, my father's death was the first death I've seen. So for me it was like, ऐसा कैसे हो सकता है, you understand? Because मेरे दादाजी भी थे, मेरे दादाजी भी थे, नानी भी थी, you know, तो मैंने कभी ऐसे in close नहीं देखा था कि okay people leave, you understand? उसके बाद से people have been leaving. I've lost my best friend, my school best friend, right? And heartbreaks as well. As I told you कि an artist is very emotional, you know, so it's a toll every time someone it happens. जब भी होता है तो it's a toll on your heart and mind. And then it comes in your artistry कि okay, now he's going to talk about this shit. But I've said that. I've said that, right? You're like, how long I'm always is joking. milk his I was like, breakup? कितना निचोड़ेगा एक breakup? So I was just kidding, but yeah. But yeah, Well, it's because I okay. was wondering वो एक था या कितने थे? I don't know. Yeah, I'm just kidding. Yeah. No, but also I want to ask you this, and this is kind of personal. You've said in your songs there are lines like Hanumanji inspired me, and also I want to know, like, do you have that spiritual inclination, and is that something that I'm just trying to understand your
inner dialogue, how you conduct it? Like, is there strength you derive from certain things in life? I have a, okay, I should not say this, but I'll say this. I have a song coming. It's called, yeah. So this question will, the Will be answer answered. will Will be in there from? Yeah, it's not coming like next, but it's coming really soon. And yeah, so it will be there, and yeah, let's just Okay. do that. Okay, amazing. So I want to talk about you being from Dehradun, and I feel like you've achieved so much success when you got signed to Kalamkar. You left, you kind of almost were in Delhi most of the time, right? But you never made that plan to move to Delhi or move to Bombay. You're still in Dehradun, very much it's your Dehradun is- base. I feel like you isolate yourself there to Yeah, create. yeah, It's yeah. your Yeah, 110. creative space. दिल्ली बॉम्बे जैसा नहीं है देहरादून. You know, it's so good to be. आप देहरादून रह रहे हो तो आप जन्नत में हो. In terms of लोग भी, even fans back ना late हुआ वहाँ मैं, पे but fans वापस नहीं सारी है. stream वहाँ पे देखूंगा. भाई हैं. You know, they don't really. देख लेना भाई. मेरे बर्थडे वाले दिन Why मैं you मॉल low, रोड bro? पे I'm था not और low. मैं किसी के साथ था. हम लोग पैदल चल रहे थे, राइट. और मुझे याद है कि स्कूटी ऐसे रोक दी एक बंदे ने और मुझे चाबी दी है. बोला आप पैदल कैसे चल सकते हो. So it's that love, you understand? Yeah. It's not there. ऐसा नहीं है कि वे गाने and they don't charge money sometime. मेरे से पैसा नहीं लेते. मैगी पॉइंट्स पे और ये लाइक अरे कर्मा भाई क्या बात कर रहे हो यार. I guess they know your situation in Kalamkar. That's why they are not charging money, man. But खैर. मैं उसको of course I pay. Brotherhood. But yeah, वो भाईचारा है. Yeah. And on top of that यार, अगर मेरे जैसा आर्टिस्ट दिल्ली बॉम्बे आके रहेगा ना तो ये शहर सर पे चढ़ेगा. That's You true. know. And then it will be easy as well for me. Then just I have to write bumpy tracks on a bumpy beat, and that's it. I was just joking, by the way. Kalamkar fans, Karma fans, you know I love Karma. I'm sorted. But it's not why I do this. Why? It's like Why? अगर आप दिल्ली बॉम्बे सर पे, क्योंकि मेरे एक टाइम पे आई वाज लाइक कम ऑन मैन. एक टाइम ऐसा हो गया था. आई वाज लाइक कि भाई इट्स लाइक That's hilarious. What you just did, that body language is hilarious. This is my attitude कि okay, I'm just now. What you saying? हाँ? Like ऐसा हो गया था मेरे साथ. But उसके बाद मैंने देहरादून जब मैं गया कोविड काइंड फिर जब देहरादून में रहा तो दैट काइंड humbled me down कि Okay. यार you don't need this much Yeah. drama and this much noise. Yes, You know? I was coming to that. Yeah. I feel like you isolate yourself there because also living in big cities sometimes desensitizes you to a lot of things. 100%. Maybe is that an advantage of being in a Yes, small yes, city? Like you are just more in touch with, I don't know, real things. Yes. और- वहाँ पे यार challenges अलग. देखो ये बिग सिटीज में रहना, जगह पे उधर उधर रहना, दैट्स नॉट अ बिग इशू फॉर मी, क्योंकि मैं तो लड़कियों के दिल में रहता हूँ. सर पे नहीं कहीं और चढ़ जाता हूँ. एलरिस यादव. अलग हैं. और देहरादून Okay, जैसी okay. जगह पे मैं ना वहाँ रह के भी मैं वहाँ रह नहीं पाता. मतलब माय मॉम इज हमेशा कि भाई घर तो आ जा. Oh really? हाँ, क्योंकि वहाँ पे भी I have friends and then we jam and we go into sessions every day, right? और यहाँ मैं travel करता ही हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा करता हूँ. So एक महीने में on an average I'm 10 दिन घर पे हूँ, देहरादून में हूँ. But as soon as I'm free, I'm booking my flight back to देहरादून. Like मैं देहरादून जाता हूँ, वहाँ पे you write different. You live because challenges are different. वहाँ मेरी मॉम मेरे को बोलती कि जाना दूध लेके आ कभी. You want to live that. We all have to do that. All So of you have to live that. And in Delhi, Bombay, ट्रस्ट मी, मुंबई में स्पेशली नवी मुंबई में तुम दूध लेने नहीं जा सकते भाई. कर्मा नवी मुंबई में होता तुम्हें लगता दूध लेने निकल पाता? ना ब्रो,
It's more about oh क्या पहनूं, कहाँ जाऊं, क्या खाऊं. Yes. उसके अलावा आप कुछ नहीं सोचते. तो मैं यहाँ रहा हूँ 1-1.5 साल, पर मुझको इस शहर ने ज़्यादा कुछ, इन शहरों ने कुछ दिया नहीं. मेरे सर पे और चढ़ गए थे. मेरे को लगता था कि यार अब हम ही हैं जो हैं, मतलब आई हैव. एक मिनट कर्मा भाई, नो नेम ने दिया 40 रुपए. ब्रो बंद कर दे, बोरिंग पॉडकास्ट है. वो रात म्यूजिक वीडियो लगा. अरे यार मेरे को फिर देखो, लाइव स्ट्रीम्स डू गेट ट्रैक्शन. लेट्स डू द मैथ्स. अब टाइटल है कर्मा पॉडकास्ट पे. यू गाइज नो कि मैंने वो रात म्यूजिक वीडियो इधर रिएक्ट किया है, बट अदर पीपल डोंट. समझ रहे हो? एंड इट्स सिमिलर टू इक्का एंड स्टैन वाला स्टफ एज वेल. डालूंगा ना मैं, वीडियो डालूंगा. ट्रस्ट मी, मैंने नहीं देखा वीडियो अब तक, अभी तक नहीं देखा है मैंने. मैं रुक ही रहा हूं. तो वैसा वाला सीन है ब्रो. I'm always right. I have karma. So why did you, and this is just another question that is very random, but I want to know, did getting a dog change you in any way? Change me 110%. Yeah. How? Oh, he I want to has know. a similar So, breed to after रफ्तार, 7 right? रफ्तार को ब्रीड नहीं बुला रहा मैं. रफ्तार के पास जो कुत्ता है उससे सिमिलर वाला ये है ना, या फिर वही ब्रीड है आई गेस. मैंने स्टोरी देखी थी. I met आकाश, मेरा बचपन का दोस्त है. Oh, what a story, man. Well, आकाश मेरा, Long story I have short. met like आकाश के साथ मेरे, आकाश इज लाइक अ गाय. यू नो, मैंने जो गाड़ी की फोटो डाली उसमें एक थर्ड फोटो में एक अगली लुकिंग गाय है. वो मेरा दोस्त है. मैंने ऐसे करके. So mean, yeah. But yeah, I told him कि यार I need to get a dog because I was Abhishek was actually not in Dehradun. Wait, you need to get a dog. What was the need? ये वही बोल रहा हूँ मैं कि अभिषेक वाज नॉट इन बोल नहीं दे रहे. हाँ. ये बोल रहे क्या, सुनाई नहीं दे रहा. स्लीप एट लाइक 8-9. मैं रात भर जागता हूँ. एंड देन अब क्या करूँ, आई हैव मेड सॉन्ग्स, द एल्बम वाज देयर, अब कुछ करना नहीं है. एंड देन आई यूज्ड टू मिस पीपल, यू नो, लाइक सो मच. I went through a phase in my life where I was just missing, and I was like, oh, how helpless can someone be, you know. So getting him changed this whole thing completely. Like he came in my life. So मैं लेने गया था. There was a black American pitbull जो बिल्कुल ना प्यूमा जैसा लगता था, right? And इसके ना थोड़े legs में problem थी, right? Yeah. And मैंने ऐसे किया था दोनों को, बिकॉज उसको कोई भाव ही नहीं दे रहा है. वो छोटा सा है और यहाँ पे सब खेल रहे हैं और उसे वो वहाँ पड़े हैं. तो मैंने उससे पूछा कि यार इसका क्या सीन है. उसने बोला कि यार ये तो इसके थोड़े डिफॉर्म्ड ऐसे ऐसे है और इसका तो मैंने आप क्या करोगे. तो ये सब देखते हैं एट सो मेनी थिंग्स नाउ. Oh no, that means yeah. सो आई वाज लाइक यार ठीक हो सकता है. उसने कहा हाँ भैया हो सकता है ये वो. आई लाइक ओके. So does it? Wow, I was surprised because you already are like, you know, the man of the house. You already have responsibilities, and then you become a parent to a dog. To a dog, yeah. So I was just like, That's was that so a very? sweet, man. I want to be responsible for one more life form, kind of thing. Like, नहीं, I am responsible for a lot of life. yeah, exactly. But Being a Doberman, but like he is used getting to a dog you know. It's a joy. Isn't it? Yeah, it's a joy. I love dogs. I love loyalty, you know. You understand? That's the reason I don't Interesting. like cats that much. Now we're talking. Okay. You don't like cats. I don't like cats Same. because they are not loyal. You know, they eat their owner if they die. And there's an episode, a documentary I've seen. Okay. The dogs actually. Yeah. I didn't know this. Yeah. Okay, nice. No, good. So I want to talk about in Ek Se Teis, how you started and the things you were talking about. That was one of your first releases also, right? One of my first, yeah. The first Actually, one. I was looking Yeah. forward to this Yeah, podcast. two more and then exit. And then, yeah, so it was in Can't believe the early ये part. कितना- And I feel like that song is what really got people to connect with you. Yeah. Right? Yeah. Wasn't it? Yes, Because yes, also yes. the things you were saying and who you were and baal aise the कोई or बताएगा it ये was very, and कितने now मिनट people का like have memorized it and there's Yeah. It's an Little anthem kids kind of who- thing. Yeah. They perform it in farewell and colleges and schools now. I've seen those. You share those clips. How does it feel? It's crazy. It's like of course it's crazy. It's the cult of the introverts. Yeah.
exactly. That's like related to that. Yeah, I love it. So yeah, they just do it and it's fun. See, I got 2 when I घंटे से ये already entered अभी भी this premiere हो scene, रही है right? ये। Yeah. I was doing like मैं देहरादून में कर रहा 8 बजे आया है ये। ड्रॉपिंग 1-2 गाने मस्तक पे दस्तक अगर मैं आ रहा है ड्रॉप। Yeah. So when I जब कलमकार में आया, when I got signed and everything, so I used to have मैं this आया thing भाई। कि okay, दिल्ली More में than 2 ऑलरेडी hours। बहुत सारे रैपर्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं, उस वक्त अच्छा कर रहे थे, है ना? I was like, will they accept me because the writing is different. Yeah. You understand? Yeah. The writing is actually very different. And they've been doing great and they are doing great. So उनका already वहाँ पे fan base है. And me coming from Dehradun and claiming that कि okay, I'm also, you know, just and it's the first track and Yeah. my achievement is one day 1K. Like एक दिन मेरे गाने पे 1000 views आए थे on my own channel. I was like super. I feel like I'm like made it, man. What do you need? So उसके बाद to write, but I got to know that I just when I drop rap करते हैं, it's a simple line. It's rap करते हैं. Yeah. So that connected. Yeah. And same thing worked with 1 से 23. Yeah. I just started saying that पहले बाल खड़े नहीं थे मेरे. Yeah. It's no hello, I'm back, I'm gonna do this or nothing. It's just a story and Real, then people. yeah. कुछ And I और बोला like था, telling stories. Yeah. Like that's one of my Young strong Ghalib ने zone पहले as बाल well, खड़े and then I नहीं थे। love doing that because that's the reason I rap for. That's a real reason. So then, from that person that you were talking about in that song, and then you getting signed, you moving to the city, यार, and कितने then लोग आ रहे of course भाई? in your अरे मैडी भी आ गया। sort of journey after that, we saw a very real time transformation of karma that was happening. Not just like in terms of what you wore or how you looked, it was your body language, it was the things you started talking about. Yeah. And I feel like does all of that, let's talk about the external stuff, does all the iconography, like the streetwear, the sneakers, the whole like thing that you said you see in the big cities more, Gentleman, you are a legend. does Thank that you, bro. really matter? Like how much of that matters to you as an artist, and how much of that was your small town boy learning the ways of the big city, and how much of that was just okay, I am a rapper now, I have to do this? नहीं ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो मेरे को ये कुछ करवा दे कि ज्यादा I स्लो have to पेस now. क्यों लग रहा है यार ये? है ही नहीं. Okay. इसीलिए मैं आर्टिस्ट बना. पता नहीं Freedom रणवीर चाहिए. वाले इसमें उतना ऐसा नहीं कुछ लग है रहा नहीं था। कि you have to do this. No. I have to तो फिर नहीं हो Like पाएगा. playing a role kind of thing, I हाँ. meant. No, I feel that इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी नहीं see है it's a यार। flex because जो भी कपड़े इतने महंगे पहन रहा है, हम जूते इतने महंगे पहन रहे हैं ना, उसके दो तरीके होते हैं, दो रीजन है. एक तो है कि चलो ठीक है जी, आपने यू आर हैविंग अ गुड लाइफ, बट उसका एक और बिकॉज नोबडी इमेजिन इट लाइक 3 लाख की जैकेट एक टाइम पे फॉर लाइक जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे इट्स लाइक क्या है 50,000 का जूता, यू अंडरस्टैंड, 1 लाख के जूते, और लाइक यार क्या है, बट देन व्हेन यू मेक मनी एंड देन यू आर एबल टू बाय इट, देन इट्स अ फ्लेक्स टू पहला तो योर सेल्फ के लिए कि ओके आई कैन वेयर इट, बट देन एक टाइम वो आया था कि आई वाज जस्ट, वो भी बात है कि मैं सिर्फ उसके पीछे भाग रहा था. आई वाज कलेक्टिंग, आई वाज लाइक, क्योंकि क्या होता है ना जब आप छोटे से शहर से बड़े शहर में जाते हो एंड देन यू अटेंड सम पार्टीज, आई एम नॉट इनटू पार्टीज, तो आफ्टर दोस 2 parties Put off by 2 parties. I love it. yeah, but when you, आप जब दिल्ली बॉम्बे जाते हो तो यहाँ पे इतना ज़्यादा ये कल्चर है that people talk about it and then पहले तो मुझको पता नहीं होता था. Talk about what you're wearing. Shoes and brands and you know. Yeah. Of course they do. Okay, this is a good shoe, man. This is an 86 something, right? And I'm like, the fuck, it's a comfortable Seriously? shoe. Yeah. Oh, you know, so some people do it for that, and now I read about it because I love to read. Not on the books though, like on the article thingy. You scroll and then you learn. And because it actually helps you. Algorithm भी अच्छी होती है ना आपके पूरे हाँ, right. अच्छे suggestions आते हैं if you read good things on internet. Right. It's for the feed. Yeah, for the feed. So yeah, but now I follow it a bit, but it's not essential. Okay. पर एक गलत चीज भी नहीं है यार, अगर मैं until unless मैं fake नहीं पहन रहा, अगर मैं इसलिए नहीं पहन रहा कि देखो जी, it's good. I mean, no, it's fine. You I mean, you earn the money, so spend it how you want. And
I feel like it also probably provides motivation, no? Yeah. To of your course, of fans, course, like, of course. okay, I also want to get there one day. Exactly, यार. Okay. As long as you don't get lost in it and obsessed with it. हाँ, पागल नहीं हो जाना इसमें कि you have to have it, otherwise दुनिया का अंत है. I've seen people waiting Yeah. कि नहीं यार यही चाहिए, नहीं हो पाएगा, getting depressed out of it, and that's like weird, to be honest. But you do it to tell your fans कि भैया हमने करा, आप भी कर सकते हो, just be on the right path. ये सही रखो, ये सही रखो. Okay. So you और also क्या got this होता tag of, king of rhyme schemes among many tags. I want to know how हाँ, you king of like. Do you rhyme take these schemes. seriously, or you're like, हाँ, okay, ये हो गया tag, up Drunk next tag reaction of ही Nunchaku, it आएगा. was so funny. Wait and watch. It's not Seeing like after a you long see. time, It's oh. like I'm not chasing the tags, but the thing is that when someone say that okay, मेरे को अगर आपने मेरी तारीफ करी है ना, तो फिर मैं उसको एज अ ड्यूटी रख लेता हूँ कि अब मैं इससे नीचे तो नहीं जा सकता. अगर तूने मेरे को उस पेडिस्टल पे बैठा दिया है, Oh, nice. तो मैं उससे नीचे तो नहीं जाऊंगा भाई तेरी आंखों में. So I'm going to be best in every track. So I don't own it like कि, but I वो know बंद मत कर दरवाजा बाहर से. कि rhyme schemes and everything, the mind works differently. I feel that बहुत सारे artists जो मेरे साथ sessions में है, producers, engineers, they say that अब तुम beat अलग सुनता है तू. You don't get the pockets the way you start flowing अलग होते on हैं, the हाँ. beat. It's like we don't imagine anybody doing that in terms of like तूने कर दिया तो now it's good, मतलब अच्छा ठीक है कर सकते हैं, but like we don't imagine that. You see people pocket picking, debating and कि then मुझसे rhyme better scheme is कौन, all better about कौन. how you dictate things, because sometimes it does not. Sometimes, for example, LOC कितनों को पता है अलग अलग पॉकेट्स में राइम कर सकते हैं और तुम्हें वो थोड़ा ऑफ भी सुनाई दे सकता है, बट तुम डिलेड फ्लो भी कर सकते हो, तुम अलग पॉकेट्स में कर रहे हो एक्चुअली राइम. क्या कूल चीज है यार, वो कितना कूल चीज है. track में I do this 16 bar rhyme scheme where I start with किसी की बेटी and then starts with something जो कि उससे rhyme नहीं होता कि ठीक है, but the way you say it, किसी की बेटी की deep sexy physique भी ठीक थी, so it's like the way you say it and then you put it in, yeah, that's you know it when you write. So that evolves. Yeah, that evolves. And you work on those things consciously. Yes. Now I try not to overdo it. Okay. Yeah, because sometimes it's like अरे तो टक 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 ये हो गया एक बार, ठीक है. अब उसमें नॉर्मली कैसा होता है, पहला टक जो आता है उसके बाद तुम राइम करते हो, ये करते हो, उसके बाद रैप करना शुरू करते हो, तो उसके बीच में बीट्स के बीच को एक ऐसा पॉकेट्स होता है, तुम अलग भी वहां पे फ्लोज कर सकते हो. 2 लाइन तो मैं क्या करता हूँ लिखते टाइम, मैं सिर्फ 2 लाइन राइम करता हूँ, उसके बाद मैं कॉन्स्टेंटली फ्लो स्विचेस लाने की कोशिश करता हूँ. तो मेरा ऐसा है कि मैं और कितना डिफिकल्ट करूँ, और बोलते ना थोड़ा चैलेंजिंग रहे मेरे लिए भी कि 2 लाइन एक फ्लो में, बाद में अलग फ्लो, बाद में अलग फ्लो, 2 लाइन में फ्लो स्विचेस वाला, जो कंपल्शन नहीं है, 4 लाइन भी कर सकते हो, बट खैर. मैं ऐसे वर्सेस लिखता हूँ जो सब कुछ सबसे राइम हो रहा होता है. Yeah. एंड जब उसको मैं 2 बार सुनता हूँ तो इट्स टू मच ऑफ rhymes, you know, and then I don't want to do it in every other track. That's why, because I can go like fucking कितना भी, you know. Okay. तो उसमें क्या है कि I try to थोड़ा balance it a bit now. Okay. So when you're an artist and you're starting out, then I'm sure you know this, there's a lot of hunger, right? It's almost like the hunger at your starting point is almost unmatched in its fervor or passion, if you want to call it that. And then I've seen many artists कि वो with time थोड़ा fade होता है और फिर वो spurts में कम ज़्यादा होता रहता है. Right now you're at like a whole new phase, or you have been this past year. हाँ जी. At what level is your hunger right now? Oh, it's What would you so say? much. It's very it's very weird to even say कि जी मैं तो ये बहुत जुड़वा hungry shot हूँ वाला और मेरे को मेरे बताते पास मत तो अब देखो मैं क्या जब तक करूँगा, वो you नाम know. नहीं ले रहे, मैं It's like कुछ नहीं very कर पाऊंगा. weird to say, but of course that mindset is actually this mindset I have developed is a very dangerous mindset. Okay. Sometimes I talk to myself कि okay, how are you gonna, you know, so it's saying कि भैया मेरे में हंगर बहुत है. हंगर इसलिए भी है क्योंकि इसके अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं. You know,
अपने पास कोई प्लान भी नहीं है, यही है, यही अच्छा करता हूँ, यही करूँगा, यही करना है, yeah. बिकॉज आई नो आई हैव थोड़े बहुत स्किल्स. I love to cook, but I don't want to cook for people. You understand? I want to rap. There's a difference. So yeah, I mean, this that hunger, and of course, when you have so much to achieve, so you run. वो बंदा So is कहाँ it गया जो more 12 के if दिन you आया look था? back than when you started यही out तो है now? जो लिख रहा है वही बंदा है शायद. Because apparently, the numbers I used to imagine, I got those numbers. So now to sustain that, It's even it's harder. extra hard because there's so much talent coming out every day, and sometimes I feel ki yaar, this is like how somebody is gonna cope up with that, because abhi kya ho भाई raha hai melody गाने डाल ki उसमें. हाँ, every डालूंगा, day is a डालूंगा. new track and someone likes some other shit, you know. So to sustain that, you have to have that hunger. You cannot say कि हो भाई गया तेरी जी. हाइट क्या है? Why या Bella मुझे looking like मुझे he's पता 10 year है, old? तुम्हें पता है मैं क्या करता था 6'4" अपने टाइम भाई. पे, like I'm not that Bella guy. might be Yeah, I'm 5'7", gonna be 5'8". like the same hunger. So that's what I'm like very focused on when I try to understand artists. Is there's so many struggles, not just personal, professional like this. Like you can't rest even though you get there. You can't rest. There's a whole other level of fears or things that are constantly on your अबे mind. खाली 7 फुट दिखता है यार. What is the most even difficult thing close. you feel about this life path for you? To choose the right person, actually, you know, it's very हाँ hard 6'2" सही हाइट है भाई. because yeah, Choose the Dharma भी right 6'2" ही है शायद. person. right person to have right friends. You cannot. Wait. You said person and now you're saying friend. Yeah, I Are mean, you talking about a love I'll interest? tell or- you. No. The person means like I'll tell you how. See, when you जब आपके पास आप जब चमकते हो ना तो there are so many people try to have that shine. Okay, या मेरा दोस्त है या मेरा भाई है या मेरा बॉयफ्रेंड है या I talk to him or whatever, right? So it's really hard because आपका आधा समझ ही नहीं रहा, दिमाग कहीं- आर्टिस्ट कहीं एक इसमें ऐसी जॉब किधर है बात चली कि जा वो रही है. 9 to 5 नहीं है, but it's like 24/7. Right now I'm thinking of rhyming something to something. You know, it's a thing. You Yeah. cannot stop it. Never stops. Yeah, it never stops. So आपका आधा दिमाग वहीं है, सारी एनर्जी वहीं है. So somebody comes in your life, you let them in. दोस्त भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, and then you give them priority, and then eventually you find out कि okay, this is not, this was not, ये मेरे साथ इसलिए नहीं थे. सीन अचानक से बहुत That's एक्टिव तो हो very गया. hard and actually that वो खराब is good करता है for us. चीजें. बाकी सब मैनेज हो जाता है. You be great, you have people around you. मुझे अकाउंट्स का कुछ भी नहीं आता, बट मेरे अकाउंट सॉर्टेड हैं भाई. So बाकी सब Okay, so you're saying finding the flex. real people around you is the hardest thing in this. yeah, because they will say anything. Yeah, Wow, that's really sad. yeah. And you eventually, it's not sad though. It's a challenge. I take it as a challenge. Really? Sadness नहीं है ये कि मतलब आप कीजिए, हम तो बड़े बेचारे हैं आर्टिस्ट. हाँ, नहीं, but I'm just saying कि फिर आप लोग आपके friends बन जाते हैं या you know they. But it's a challenge. Then you're Yes, like without okay. beef scene fire पे. वो तो हाँ आपका- यार. मतलब कोई अच्छा तो चल आपका रहा है. काट के जा रहा है तो आपकी भी गलती है उसमें. कोई And आपका you have काट to के go जा रहा through है. it. क्या चल रहा है ये and, conversation अब? That's why I can count my friends on fingers. Okay. इतना ही zone है. Okay, we're gonna pin this and we're gonna come back to it. Yeah. But okay, like there are some lines that I noted from your songs. पता था रैप करना जहर का प्याला है, पूरा प्याला पिया, अब हूँ पूरा toxic, right? Yeah. Then you said टूटा है दिल वो झूठा था प्यार, तभी हो रूड और बार्स है हार्ड. Then लेक सीखा दुनिया इतनी भी हसीन नहीं, तभी ईगो तभी रूड तभी मीन, right? Yeah. I feel like a lot of these lines, मैं घुस गया बेकार के व्यापार में, a lot of these lines are telling me that you're feeling jaded after Yeah. all these years in the industry. Yeah. Am I right? Like, See, talk to me the about that. blueprint of this industry is actually not for a real artist. I'm going to tell you that because ना यहाँ पे the blueprint is very it's different, you know, and then life. Ultimania big scratch. Luckily, I'm very sane. I'm a sane guy. I'm a He is a happy guy. crazy मुझे artist. खुश रहता हूँ मैं. मुझे खुशी पसंद है. I've met these guys. Lost Films के साथ काम किया. खुश. मनिल के साथ खुश. सब खुश हैं मेरे आसपास. Because उसके अलावा मैं कुछ और
अरे तुम क्या लोगों की फील जॉलाइन देखते करता हूँ बैठे हो यार? इस चीज में यार. इंडस्ट्री इज इंडस्ट्री, बट देन इफ यू कट द, अगर आप बीच के बंदे काट दो और यू आर जस्ट टॉकिंग टू योर फैंस, तो उसके बीच में कोई भी नहीं है. तो आप बस, I don't really want to talk about this industry part because ये ना it's like I feel कि as real as you आई कैन स्मेल get, कि कर्मा it's इंटरव्यू एंड होने का ज्योति दीदी को challenging आई for लव यू you बोलेगा. अरे बाप. because someone is not liking this somewhere. You understand? I'm trying to say because there are big people. And as an artist, you sometime आप hack बता देते हो audience को कि भाई ऐसे करना हो जाएगा तेरा भी. They're like, fuck, ये कैसे बोल सकता है, ये कैसे कर सकता है ये. So you know what, you can't be real in this. And I take this as a challenge. For example, a song, I don't know, IDK, that song I made I don't Yeah. know. that उसको डालने का रीजन ही ये था कि somebody was arguing with me कि भैया एल्गोरिदम ही होता है जो होता है, और इसके अलावा तो टैलेंट तो कुछ होता नहीं, फैन बेस कुछ होता नहीं, आपका कुछ नहीं होता. तो आई टोल्ड हिम कि यार एल्गोरिदम तो ठीक है बिकॉज आप उस प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हो. सो दिस इज ऑल दिस फीडिंग, यू नो, कि भैया इस टाइम पे डालो तो इतने व्यूज आ जाएंगे, और बजे? ऐसा नहीं है. सो आई ड्रॉप दैट सॉन्ग एट 3 AM इन द मॉर्निंग, रात को, विदाउट एनीथिंग. आई वाज लाइक ये लो, राइट. एंड ही वाज लाइक आपने गाना खराब किया है, और यू नो इट्स नॉट गोना मेक एन इम्पैक्ट और वट एवर, बट इट डिड. It did, yeah. या मेरे को शोज पे लोग, मैं उस गाने को ट्रैक लिस्ट में डालता नहीं था. Oh. Because I'm like, कि, okay, nobody wanna hear this freestyle of 2 minutes, right? Yeah. And about some girl I met. But yeah, the chant, like, I don't know, play that thing. So yeah, it's not about, it's just you, and in the end, it's just the talent and it's the fan and the artist. बाकी सब तो दिखावा ही है. Oh. Yeah. Okay, interesting. Yeah. You seem to have wisened up in many ways. Yeah. You know? Yeah, So, life. and it's good because now you're not on your own, but you're kind of like, and I don't want to ask you why यार and बट all of कितना that. वियर्ड है यार, पॉडकास्ट में सामने बंदा है एंड यू आर चेकिंग नोट्स लैपटॉप में कि आगे क्या बोलना है वाला. एटलीस्ट फोन पे रहता है, इट्स डिफरेंट, बट पता नहीं, थोड़ा वैसा ऑथेंटिक नहीं लग रहा. Because that's obviously very personal to you. But after you left Kalamkar, what was your, like, how did you feel? That's all I want to know. Like, what were you going through? Because I think your fans want to know. Don't talk about anything you don't want to talk about. But what were you feeling? Of course, I mean, leaving your family hurts, and it's not like I've left them. Okay, So I talk interesting to topic. them. We share memes and we talk not almost, but yeah, we talk. I know that they're doing fine. They know I'm doing fine. Yeah. And of course, I miss them. I miss being with them because it was a great time, man. To be really honest, I know that they miss me because they tell the same thing. Yeah. And I miss them too. Yeah. Because I tell them the same thing. And yeah, I know that वो झूठ नहीं बोल रहे हैं because yeah, that time was, we were not like artists साथ में रह रहे हैं और you know ऐसा नहीं था. It's like a family. And any allegation जो भी लोग बोल देते हैं बाहर जाके कि भैया मैं कलमकार ये वो, it's not true and it's क्या मैं not आगे right skip as कर well. सकता हूँ As an artistry point of view, you cannot defame the organization or the platform who That's true. gave you the authority to speak. अगर वो ना हो तो कैसे बोलता? Yeah. Understand? अगर वो तेरी लाइफ में ना आता तो be thankful Yeah. about that. You know, people have been hearing and see, मैं still यही बोलता हूँ. लोग बोलते हैं नहीं जी गलत हो गया, अच्छा हो गया. भाई सबके साथ होता है. You cannot just fucking bombard one day उठ के कि चलो जी आज ये कर देते हैं. Coming back to the question, I feel कि how I felt sad. Yeah. And I talked to them. ऐसा नहीं है कि हम बात नहीं करते. And yeah, I mean it's all Gucci. Yeah. I like that. But you did 3 घंटे sort का of तो go नहीं है into ना podcast. a space where you needed to isolate yourself for some time, right? For 3 months. Yeah. Yeah. So, I guess, and then you came I back. was like a fresh property when I left Kalamkar. So I was like a fresh thing on the market. Everybody wanted to have it. Like a good, nahi, I Are can't you say that. serious?
But yeah, so I'm sure, no, that's very ज्योति सरदार को देख के believable. कर्मा बना fresh. Because okay, no. yeah, it's like I heard from people in the industry, oh, we're trying to get in touch with Karma. yeah. No one could reach you. No one can reach me. That is the fucking flex. That's your flex. I'm very happy. I like it. But so tell me, when you announced this whole thing, and I'm kind of just staying in the zone for a bit, when you announced that you're leaving, obviously, I don't know if you slept or you didn't sleep, but when you did sleep, and the first morning that you woke up and said, okay, I'm going to have to run this game a different way now. What was that morning like? Were there any thoughts? That night was like, I'll tell you, it's not like कि I भाई woke chat up and पढ़ we parted ways. You know, ऐसा नहीं है कि अचानक मैं उठा और मैंने बोला कि भैया अब मैं साथ या हम लोग अब साथ नहीं है ना. There's a process, there are reasons, there Yeah, are yeah. good and bad reasons, है ना. But I don't know, ये कुछ ज्यादा लंबा है क्या? it's a weakness, man. It's weak as fuck. Really? Yeah. This is romantic love I'm talking about. अरे प्यार की whatever बात love. कर रहे हैं अभी. It's a weakness, not strength at all. Okay, interesting. What is your biggest USP according to you? Taking risks. Taking risks. Yeah, and being very secure. I'm not an insecure guy. Nice. What do you have zero patience for? The songs and the money, like, yeah. That's Okay. it. What annoys you most about the industry? एक चीज बोल. There are a few things, but yeah, we have covered them. So I'll just go with some artists and now भाई we किस so डेट ही much, चल रही है. but it's okay. 3 घंटे और 20 they're मिनट का good. पॉडकास्ट. They're alive, so it's good. Hilarious. Okay, which song of yours do you personally keep on loop? Right now it's 35, and I really don't 35 अच्छा hear. गाना है. अभी ज़्यादा सुनता नहीं हूँ मैं अपने गाने, to be really honest, because दुनिया आपने मगर इतना भी सुन अच्छा चुके है. होते हो, आपने लिखा है, सब कुछ किया है, तो उसके बाद अगर आ जाता है तो yeah, 35 is good. I like नरमाहट. It's good. I'm like कैसे लिखा है? I'm so good. How do I do it? So 1 second, before the next question, how do you do the sarcasm that you do? Like, is that just it's you? Like, natural. is this natural? That's how you are in real life? इसका कोर्स होता है. It's my favorite. तो मैं आपको लिंक भेज दूँगा. इसका कोर्स. Acha, very nice. Okay, which song took you the longest time to write? The longest. Yeah. अगर आप बीच में प्रोसेस में छोड़ दो तो ऑफ कोर्स यार I don't really remember which song the longest. नरमाट हो सकता है, उसमें Maybe- बहुत राइम्स थी यार. Maybe लेना मेरा नाम, because I had to keep it very simple. लेना मेरा yeah. नाम. It was a very singable thing. Huh. I had to rewrite and then rewrite, then again. So yeah, it took some time, but not much time, but yeah, comparatively. They're getting Like you comfortable. said, keeping it simple is difficult. Yeah. You know? Okay. Which artist or song are you vibing the most to lately? मैं लेना आजकल मेरा नाम. सुन रहा हूँ Big L, and then Bro, Crooks sometime I Corner go पे to कृष्णा this का new J. video आ Cole रहा and है. Drake radio. सुबह where they are- 7:15 yeah, को. so it's good. कल सुबह 7 बजे. Okay. Any personal favorites in Indian hip hop right now? I mean, taking names is, I mean, I'm friends with everyone and they are doing great. So, I'm personal favorite वाला ऐसा कुछ Song. नहीं है. Favorite song? Huh. अरे यार, I really like Raftar's Proud. Okay. Yeah, it's a great storytelling and बहुत सही. being on Proud that तो बहुत- level and Goosebumps गाना है. saying those things, having that weight is really good. So yeah, I love that track. Okay. What's a guilty pleasure you have? So Dad, many this is guilty getting boring, pleasures I bhai. have. I'll T3 be memes. honest. Guilty pleasure you have. I don't care, man. बोर हो गया मैं भाई. सिंपल सी बात. बोर हो गया मैं. क्या था ये? समझ नहीं पाया मैं. इधर कुछ तो सही रहेगा भाई.
क्योंकि कल कृष्णा वाले का 2 घंटा कैसे निकल गया समझ में नहीं आ रहा था, बट खैर कोई नहीं। उर्वशी अभी सुनना है क्या? वीडियो आया कि ऑडियो आया वो बताओ। MC स्टैन, अरे टी सीरीज का वीडियो है भाई, स्ट्रीम उड़ा दोगे क्या तुम लोग? अबे टी सीरीज का वीडियो है यार। स्ट्राइक वाइक पड़ जाएगी आई गेस। किसी ने करा है क्या रिएक्ट इस पे? उर्वशी, अरे जुड़वास ने करा है, ये इसने भी करा है। अरे तो वीडियो ही डालते ना यार, ये वीडियो ही अलग सा डालते, तुम क्यों मेरे से ये करा रहे हो यार अभी? वीडियो तो बहुत अच्छा, हाँ करते, वीडियो डालते ना फिर कल कल वीडियो डाल देते वो रात का भी वीडियो। अरे वीडियो में अच्छा लगेगा यार वो, अब स्ट्रीम अलग टॉपिक पे है, समझो जरा यार। ढीठ पे भी करना है, कितना कुछ है भाई, बहुत कुछ है भाई। डैम, या फिर अलग सा मेरे को स्ट्रीम करना पड़ेगा, रिएक्टिंग टू माफिया मुंडी, रागा एक्सपैंथर। यार बार्स ऑफ द वीक अब तक रिकॉर्ड नहीं किया है। आज 2 वीडियो डाले मैंने, स्ट्रीम भी कर लिया, कल डाला भी, सो जा। थैंक यू सो मच, यही तो सुनने का था मेरे को। वाह वंडरफुल, वंडरफुल गाय। भाई 2 घंटे से स्ट्रीम देख रहा हूँ, अब कर म्यूजिक वीडियो। 2 घंटे से तो मैं स्ट्रीम कर ही नहीं रहा चूतिए, 1 घंटा 16 मिनट हुआ है। 2 घंटे से कैसे देख रहा है तू स्ट्रीम? क्या देख रहा था तू तू 50 मिनट? अरे कृष्णा भाई आए चैट पे, क्या बे? कुछ नहीं भाई, किधर तुम्हें कुछ बोल रहा हूं मैं। खैर, इफ यू गाइस एंजॉयड द स्ट्रीम, नहीं किया तो आई अंडरस्टैंड, बट सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट। सॉरी मैं पूरा नहीं देख पाया पॉडकास्ट, भयानक नींद आ रही है मेरे को। हाँ। कल सुबह मिलते हैं 7 बजे कृष्णा और किंग क्रिकेट का देखने के लिए वीडियो, ठीक है? कल सुबह मिलते हैं 7 बजे। चलो बाय बाय।